हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर थर्ड, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन दिस चैप्टर वी आर knowing about the metals and non-metals and their physical and their chemical properties. After that, the ionic compounds, covalent compound, how the ionic compounds are formed from the metals and non-metals, and what are the covalent compound, how they are formed. So this is the first part of the chapter. In this first part we have discussed about the concept of metals and non-metals and the physical properties of non-metals. So let's start the chapter. First is metals. We know that the what are the metals? The metals are the good conductor of heat and electricity. They can easily pass through the electricity through them, and they are ductile and malleable in nature. But actual definition, which is a specific definition for the metals and non-metal, is the elemental species which can lose, donate, or release their outermost shell electrons or valence shell electron from cation. जो हमारे मेटल्स एक्चुअली क्या होंगी, जो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, लूज करेगी ईजिली, और क्या बना लेगी, कैटायन बना लेगी. दे आर कॉल्ड एज मेटल्स. दे डू सो बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू बिकम स्टेबल. वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहती है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहती है, वो भी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नियरेस्ट नोबल गैस मीन्स क्या होगा, जो उनके नियरेस्ट नोबल गैस होगी. सपोज सोडियम कैन लूज देयर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन एंड अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन. सो डिपेंड करता है वो कैसे लेगा. फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल डोनेट और लूज देयर आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. सोडियम electron configuration 281, atomic number 11, that is number of electron is 11. We need some energy to exit this electron, and sodium forms sodium cations and 1 electrons. So some energy is needed to remove this electron. This type of energy is not in your syllabus, but this is a concept to that can clear the exact definition and why the electrons are exit out from the metals. क्यों होते हैं और कैसे होते हैं. Ionization enthalpy or ionization energy. It is defined as the energy required to remove the outermost shell electron from an isolated neutral and gaseous atom to form cation. That is delta H is positive और endothermic reaction. ये डिफाइन किया जाता है कि आउटरमोस्ट शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए. सपोज ये हमारे पास आउटरमोस्ट शेल है और इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी हमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी. अपने आप नहीं निकलेगा. आइसोलेट मीन्स अलोन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल मीन्स पहले वो न्यूट्रल होना चाहिए, और गैसियस स्टेट का एटम लेंगे, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो लिक्विड है, उससे पहले गैसियस फेज में लेके जाना पड़ता है, तब ये कहानी होती है आयनाइजेशन एनर्जी की. एंड डेल्टा एच इज पॉजिटिव. वाई डेल्टा एच इज पॉजिटिव, बिकॉज इट इज़ अ एंडोथर्मिक रिएक्शन. हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन को करवाने के लिए. देन नॉन मेटल्स. The elemental species which can accept or gain the extra electron in their outermost shell or valence shell to form an ion. वो एलिमेंटल स्पीशीज़ जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करती है या एक्सेप्ट करती है अपने आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में, किस लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ताकि एनायन को बना सके. ठीक है. एनायन की फॉर्मेशन के लिए ये सारी कहानी होती है. जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं और एनायन बनता है. वी नो दैट नॉन मेटल फॉर्म द एनायन. They do so because they want to complete their octet to attain noble gas configuration to become stable. हम जानते हैं कि नेचर में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो हर कोई एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है. फॉर एग्जांपल क्लोरीन, नॉन मेटल एटम टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू outermost shell to complete their octet. When the extra electron is just added to the outermost shell, then some energy is released. These energies are known as electron affinity or electron gain enthalpy and form the anion. See, what are the electron gain enthalpy? देखिए बेटा, जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो देखिए उस अपनी फैमिली में ऐड होने नहीं देना चाहता, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसके अंदर जाएगा. जब ज़बरदस्ती उसके अंदर एंटर करेगा तो कुछ ना कुछ झगड़ा होगा, और वो झगड़े की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी. ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, गेन एंथैल्पीज. इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड when an extra electron is added to the outermost shell or valence shell of an isolated neutral and gaseous atom.
देन डेल्टा एच इज नेगेटिव। देखिए जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी क्या आती है, रिलीज मीन्स नेगेटिव, उसमें से लॉस हो रही है एनर्जी। नाउ सम मोर एनर्जीज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BD, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है, यानी जो भी केमिकल बॉन्डिंग उनके बीच में है, केमिकल फोर्सेस उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल वी आर नीड टू मेल्ट द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करना चाहते हैं, जितने हम उसे हीट देंगे उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट इज बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन टू स्पीशीज कम्स इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म बॉन्ड। ये वो एनर्जी डिफाइंड है जब दो स्पीशीज कॉन्टैक्ट में आती है और बॉन्ड फॉर्मेशन करती है, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। Bond dissociation and bond initiation energy are equal. Suppose see in the example. First is bond is dissociated, bond टूटा, जो energy release हुई that is bond dissociation. Then bond again formed to form chlorine again, that is bond association. Both energy are equal for same compounds. Next is physical properties of metals and non-metals. We very well know that what is the meaning of physical properties. That means physical appearance of the metals. They are known as physical properties of metals and non-metals. Generally we are calculating the physical properties, their density, melting point, boiling point are the physical properties. Hardness, which provide the tough and solid nature to substance, and rigidity is a property to substance to make it fixed shape. We know that metals are generally hard and rigid in nature. Metals क्या होती है, जनरली या तो हार्ड होती है और उनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। Except sodium, potassium and lithium are the soft metals. They easily cut with the knife. सोडियम, पोटेशियम और लिथियम क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं जिन्हें इजीली नाइफ से कट किया जा सकता है। बट मर्करी इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एंड गैसियस इन नेचर, एक्सेप्ट कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, एंड ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल एट द रूम टेम्परेचर। सो हियर बेटा एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट. Next is melting point. What is a melting point? The temperature at which a solid starts to melt is called melting point. And what is a boiling point? The temperature at which the pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure, then the liquid starts to boil at this temperature is called boiling point. देखिए बेटा क्या होगा, इतना मैक्सिमम टेम्परेचर जब उसका जो प्रेशर है लिक्विड का वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, देन इट स्टार्ट्स टू बॉइल, वो वेपर फेज में जाना स्टार्ट हो जाएगा और बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. सी जनरली मेटल्स हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. एक्सेप्ट मर्करी, गैलियम, बिस्मथ, जिंक एक्सेट्रा मेटल्स हैव द low melting points. They, for example, gallium is melt over the palm of our hand, and metals which have the higher melting points are tungsten, rhenium, molybdenum, chromium, etc. are the higher melting point metals. Now in non-metals, generally non-metals have the lower melting point and boiling point because they are mostly are gases. Except diamond have the highest melting point in nature because this is hardest substance and strongest chemical bonding between them. Then non-metals like sulfur, phosphorus have the higher melting and boiling points. Next is conductivity. High heat conductivity. When the heat is easily passed through a substance, then it is a good conductor of heat. Current conductivity. When the substance which is can easily allow the current pass through them are called good conductor of current and electricity. Metals are the good conductor of heat. Reason because they have the free electrons to transfer the energy, and metals are the good conductor of method conduct the heat by conduction method. We have studied in class 7th method are the good conductors of metal conduct the heat by conduction method. We know, remember the activity of the a ruler on which the nails are to be sticked with the help of wax. One side we can burn a candle, then one by one the nail is fall down with the transfer of heat from one end to another end, from colder end to hotter end to colder end. Copper and aluminum metals are the good conductor of heat.
And metals are the good conductor of electricity also. Reason because they have the free electrons to transfer the energy. Silver is a good conductor of electricity, copper, then gold, then aluminum. Silver is the highest conductor of electricity. Now we turn on non-metals. Non-metals are the poor conductor of heat and electricity except graphite is a good conductor of electricity. Reason, graphite have the free electrons for conduction of electricity. It is used as an electrode in the pencil cell. Next property is malleability. The property of a substance to convert into thin sheets by hammering on it is called malleability. The property of a substance to convert into thin sheets by hammering on it is called malleability. Second is brittleness. The property of a substance to break down into pieces by hammering on it is known as brittleness. Metals are easily converted into thin sheets by applying hammer on it, so they possess the malleability property. Gold is more malleable than silver, then aluminum, then copper. Gold and silver works are used to decorate the sweets, and aluminum foil is used to wrap the food items. In non-metals, non-metals are breakdown into pieces by applying hammer on it, so they possess the brittleness property. Only solid non-metal possess this property. Ductility. The property of the substance to drawn into thin wires is called ductility. Metals are the easily drawn into thin wires, so it possesses the ductility property. Gold is more ductile than silver, than platinum, than copper and aluminum. Non-metals do not possess the ductility property. Tensile strength. The ability of the thin wires to lift the more load without breaking it. Metals show the tensile strength, so the wires of the bridges hold the more load due to the more tensile strength, and the wires of lifts, wires of cranes are made up of metals. Tungsten have the highest tensile strength in nature, but steel is also have the higher tensile strength. Non-metals have the low tensile strength. For example, rope of nylon is less tensile than the rope of steel. Next property is sonority. The sound producing property of a substance and sound carrying property from it is known as sonority. Metals have the good sonority property because they create the more sound. Aluminum carry the sound very easily. Does not create more sound but carry the sound through them easily. Non-metals do not possess these properties. Luster. The property of a substance to give the great shine or luster is known as luster. Metals show the good luster when they are in pure state. Iron show the grey luster, copper show the reddish luster, aluminum show the silvery luster, silver show the silvery luster, and lead show the bluish luster. Non-metals generally do not show the any luster. Non-metals कोई shining show नहीं करती हैं, except graphite has the grey luster and iodine has the purple luster. Now, up to here, the physical properties of the metals and non-metals are completed. I hope all of you are understand the concept. Please like, share and subscribe our channel for further upcoming notification. Thank you and have a nice day.